হ্যালো গাইস, সবাইকে আসসালামু আলাইকুম। তো আজকে রাতের বাজে এখন 9টার উপরে। তো কাজ শেষ করে যাওয়ার পথে তো কিছু পাখি দেখেছিলাম অনেক আগে। আমার ঘরে অলরেডি আছে, বাজরিকা পাখি আছে, ককটেল পাখি আছে, তারপরে ফিঞ্চেস পাখি আছে। তো ফিঞ্চেসের থেকে একটু বড় ধরনের একটি পাখি আছে যার নাম হলো জাবা পাখি। তো ওগুলো আমি বলেছিলাম আন্নাকে এনে রাখতে, তো আজকে এনে রেখেছে। তো ওগুলো আজকে নেব, আপনাদেরকে দেখাবো। পাখিগুলো খুব সুন্দর, আপনারা ভিডিওতে দেখবেন। আমার কাছে অনেক ধরনের পাখি আছে। এখানে দুটো পাখি আছে, বার্ড। এখানে আছে বাজরিকা পাখি, এখানে প্রিন্সেস, এখানেও বাজরিকা পাখি আছে, এখানে আছে ককটেল পাখি আছে। আর আমি যে পাখিগুলো নেওয়ার কথা বলেছিলাম সেগুলো হচ্ছে এগুলো জাবা পাখি। প্রিন্সেস থেকে একটু বড় ধরনের পাখিগুলো হয়। তো আমি কালার মিক্সিং নেব, একটা হোয়াইট নেব, একটা গ্রে কালার নেব। এখানে আছে ককটেল, এখানে প্রিন্সেস আছে অনেকগুলো, বাচ্চা দিয়েছে নতুন নতুন। এই দেখেন ইঁদুর। রান্নার কাছে ভিতরে আছে অনেক ধরনের, রান্নার কাছে আছে অনেক ধরনের ফিশ কালেকশন। অনেক ধরনের ফিশ কালেকশন আছে রান্নার কাছে। দেখেন ডিফারেন্ট ফিশ কালেকশন। এই দেখেন শামুক। அண்ணா எப்படி இருக்கீங்கண்ணா? வீடியோ எடுத்தேண்ணா. சரி, எனக்கு கொடுங்களா? சரி. ரேட் எல்லாமே அதிகமாக இருக்குது. இல்லைன்னா ஒரே கலர் எடுத்தேன்னா 800 கொடுங்களா? இல்லை, கேட்டேன் நான். செமி தான் கம்மியாக சொன்னாங்க, இது அடல்ட்டுன்னு சொல்லிட்டு ரேட் அதிகமாக சொன்னாங்க. நான் 1000 ருபீஸ் தான் நிறைய கடையில் இருக்கு. வந்து ரேட்டு 1000 தான் அது. நான் நேற்று உங்ககிட்ட சொன்னேன்னு இந்த மாதிரி அந்த ரேட்டு சொன்னேன். அவங்ககிட்ட சொல்லியிருந்தேன், ஏன்னா நான் 1000 தாங்க சொல்லிட்டு வந்தேன் அவர்கிட்டயே. நீங்கள் இவ்வளோ ரேட்டு சொன்னீங்க, இப்போ ரேட் ஏறிச்சு.